name is Akshay Mathur. Hello everyone, my name is Rachna Mathur and I welcome you to our beautiful home designed by the Bright Interiors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं ऑर्चिड पेटल गुड़गांव का सबसे सुंदर घर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। Hello friends, so I will take you on a short tour of my home. So we will start with this gallery. So as you can see on the ceiling, we have wooden rafters with beautiful lights. So we wanted something on the ceiling, but we were not sure what to do. So Dheeraj ji came up with this beautiful idea of wooden rafters, and it gives a simple but a nice look to the ceiling. And moving on, again we had a console that we wanted. We had it in our mind, but we didn't know what type of console we would like to have here. So Dheeraj ji again came up with a beautiful idea of again a very simple console with a mirror to go with it. And we have these MDF wooden paneling on this, which complements the console. Moving forward, we carried the same theme so that we have a similar looking cabinet for the TV unit. And here also we wanted to have a stone. We wanted to give it a stone look, but Dheeraj ji gave us a wonderful idea that the stone becomes very heavy. So in the same texture we can have a laminate, which gives the look and feel of a stone. And like my son, as you must have seen in the video, is a big Lego enthusiast. So we don't have decoration pieces, we have Legos as decoration pieces in our house. So when we move forward, so the color theme, we were very clear. Me and my husband wanted blue and green as the color combinations for the living room. So Dheeraj ji helped us with the right choice for our sofas, and we have a set of wing chairs, and we also did the curtains. And Dheeraj ji and my husband, we all went and chose the curtains that went with the decor. And the highlight that we love about the living room, and actually for the entire room, for the entire house, is the false ceiling. So this gives us a beautiful look, and we have variety of lights which we can mix and match for the day, for the evening. And then we have this beautiful hanging lights, and we have a center table which is a little different. It's a quartz, which is a theme which goes with our bar also. And again, another very big highlight of our house is our bar. So over to Akshay now. Probably the only contribution to the house was the bar, which is probably the most important place for me. What I really wanted in a bar was a fridge of our own, because I really didn't want to use the fridge which is there in the kitchen. So the whole bar was designed around the fridge. We were initially thinking of a different color, but thanks to Dheeraj ji and his team, we figured out that color that we wanted really would go very well. So Dheeraj ji helped me design this entire bar, including the glass and what glass would look better in the bar or not. Came up with this great idea of having the lights. And then after having our bar stools ready, I think the bar is more or less ready and pretty inviting, hopefully. So I would also like to talk about the back wall of this sofa. So this was the sofa, 3-seater sofa, and a wall behind it. So we wanted to do something to this wall, but we were not sure what. So Dheeraj ji and his team came up with a beautiful idea which looked elegant and simple of fluting. So we did fluting here along with these hanging lights, and we have a profile light which reflects on the fluting. So it makes the whole area look very bright as well as simple. So moving on, we now come to our dining room. So the bar has already been explained by Akshay. So now we have, this is the dining table. So it's a 6-seater dining table with Shisham wood. And we bought the dining table, we have not got this made. It's a ready-made dining table. And we also have a crockery unit to go with it. So we have a crockery in here. And we wanted something on this wall, so we did some paneling, simple paneling. And we had, these handmade paintings we've ordered online. So it fits perfectly on this wall. And again, the false ceiling, the highlight, like I say, a beautiful false ceiling done by Dheeraj ji and his team. Hello, my name is Aryav and I'm 14 years old.
and I study in Lotus Valley International School, Gurgaon, and I'm in 9th grade. So I will be giving a tour of my room. So welcome to the play zone. Oh, my brother is already playing with his toys. So in my front, you can see that there are a lot of toys over here, and we have the Xbox or the gaming console. So this is where me and my friends and my brother play. Then on the left, there is a huge table where I build all my Legos, and on the top there is this shelf where I keep all my Lego sets. On the side, we can see that there is a cupboard where I keep all my Lego pieces. Then on this side, we can see that there is a huge cupboard. This is where my brother keeps all his toys. Then over here, we can see that there are these beautiful blinds, which I really love. And there's a lot of open area, as you can see. And I really love to hang out with my brother and friends over here. So let me show you my bedroom cum study. So as we enter, you can see that there's this bed which I really love. Then in the front and on this side, we can see that there are two study tables where me and my brother study. As you can see, my brother is already studying over here. Then I didn't really want my room to be very kiddish looking, so we added a bike art which is made up of metal. Then we also have white cupboards which give an open look to the room. Then at the bottom we have wooden flooring which match with the blinds, so I really love that as well. I would like to thank my parents, Dheeraj uncle and his whole team for giving us this beautiful home. Thank you. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आर्यव के टैलेंट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। आर्यव बहुत अच्छा लेगो बनाते हैं और जब भी मैं इनके घर आया तो मैंने लेगो में बहुत डिफरेंट चीज यहाँ पे देखी बनते हुए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि ये एक पेंटिंग लेगो में आर्यव ने बनाई हुई है और आर्यव का भी एक यूट्यूब चैनल है। क्या नाम है आर्यव उसका? Aryav's Lego Garage. आर्यव्स लेगो गैरेज। तो मैंने और मेरे बेटे ने तो सब्सक्राइब कर लिया है। तो अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं लेगो में तो आर्यव के चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब आर्यव हमें इस आर्ट के बारे में बताना चाहते हैं जो लेगो से बनी है। So, ये एक लेगो का वर्ल्ड मैप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लेगो सेट है एंड इसमें 11,600 लेगो पीसेस हैं। वेरी नाइस। और वो क्या है? So, ये एक लेगो ताजमहल है और इसमें भी 1000 से ज्यादा पीसेस हैं। वेरी नाइस। तो दोस्तों, मैं आर्यव से मिलने से पहले ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि लेगो से ताजमहल भी बन सकता है। इनफैक्ट शाहजहां ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि लेगो से ताजमहल बन जाएगा। क्यों दोस्तों, इंटीरियर बड़ा मजेदार लग रहा है ना? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइए कि आपको कौन सा रूम सबसे अच्छा लगा और क्यों। और चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। अरे लेकिन मास्टर बेडरूम में जाने से पहले अपनी टीम की थोड़ी मार्केटिंग तो कर लूं। तो दोस्तों, अगर आप लोकेटेड हैं दिल्ली एनसीआर में और करवाना चाहते हैं अपने घर में ठीक ऐसा ही इंटीरियर, तो तुरंत मुझे और मेरी टीम को लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorinda@gmail.com। मैं और मेरी टीम पूरे दिल से आपकी मदद करेंगे। चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम में। तो फ्रेंड्स, मास्टर बेडरूम में जैसे ही हम एंटर करते हैं, एंट्री पे ये एक ड्रेसर है, वॉशरूम के पास है ये, और इसके अंदर आप देखिए फर्स्ट क्लास टच मिरर लगा है। और आगे मैं आपको बता देता हूँ, फॉल सीलिंग जो है हमने मिनिमलिस्टिक टाइप करी है, चारों तरफ पट्टा, इसमें डाउन लाइटर है और कोव लाइटिंग है, तो हम मूड लाइटिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और एक खास बात है दोस्तों, इस पूरे घर में अक्षय सर ने स्मार्ट स्विचेस का यूज करा है। जितनी भी लाइट्स हैं, फैंस हैं, ये सब एसी हैं, ये सब स्मार्ट स्विच एलेक्सा से भी ऑपरेटेड हैं और मोबाइल ऐप से भी ऑपरेटेड हैं। टेक्नोलॉजी में अक्षय सर का एक नेक्स्ट लेवल का इंटरेस्ट है और कई जगह पे घर में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और आप देख सकते हैं बेड की बैक वॉल को हमने सिंपल एक डिफरेंट टोन का पेंट करके हाईलाइट किया है। बेड अगेन हम रेडीमेड लाए हैं और बेड के ठीक सामने है स्टडी टेबल कम टीवी कैबिनेट। ये अक्षय सर ने खुद डिजाइन करी है और अक्षय सर ने काफी चीजों के लेआउट खुद बनाए हैं। कंप्यूटर से अक्षय सर बोलते हैं मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी है तो थोड़ा काम तो लगाऊं। तो ये टेबल और ये टीवी कैबिनेट सर ने खुद इसकी सेक्शन और ड्रॉर सारी चीज डिजाइन करी और मेरी टीम ने इम्प्लीमेंट करी। देन ये कबर्ड है और बेस्ट पार्ट है वुडन ब्लाइंड्स।
सो मैं बहुत ज्यादा वुडन ब्लाइंड लगाने के फेवर में नहीं था, बट अक्षय सर की चॉइस थी कि हमें वुडन ब्लाइंड चाहिए और ये लग के बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही प्लस पॉइंट ये है कि जो पैलमेट में हमारी जगह वेस्ट होती है, घरों में हम 8-8 9 इंची के पैलमेट छोड़ देते हैं डबल कर्टन लगाने के लिए, तो वो वुडन ब्लाइंड से सेव हो जाता है और इसके ऑपरेशंस भी बहुत आसान है। अगर हमें इसको ओपन करना है तो हम इसको आसानी से ऐसे ओपन कर सकते हैं सनलाइट के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ और बातें आपको इस घर के रिगार्डिंग बताता हूँ। सबसे पहली बात, हमने यूपीवीसी विंडो पूरे घर की चेंज करी। जितनी भी एग्जिस्टिंग यूपीवीसी विंडोज थी तो वो ओवर दी टाइम पीरियड वो डिग्रेड हो चुकी थी, तो हमारे सर ने सारी यूपीवीसी विंडो चेंज कराई है। वॉशरूम की पूरी प्लम्बिंग लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन सब चेंज कराए हैं और वॉशरूम हमने काफी अच्छे तरीके से रेनोवेट करे हैं। तो चलिए अब मैं हूँ मास्टर वॉशरूम में, आपको मैं ये दिखा देता हूँ। फ्लोरिंग पे हमने मोरक्कन टाइल्स का यूज किया है और वॉल पे भी हमने विट्रीफाइड टाइल लगाई है। ऊपर हमने ग्रिड टाइप की फॉल सीलिंग करी है। और एक खास बात जो अक्षय सर ने हमें आइडिया दिया, हम वॉशरूम में हमेशा छोटे छोटे 2 डाउनलाइटर्स लगाते थे, बट यहाँ सर ने हमें आइडिया दिया क्योंकि ग्रिड सीलिंग है तो एक 2x2 की लाइट लगा दें। तो ये 2x2 की लाइट का आइडिया मुझे बहुत बढ़िया लगा। वैनिटी हमने क्रिएट करी, मिरर्स बैक करे, तो वॉशरूम के ऊपर इस घर में काफी ध्यान दिया गया। सारे वॉशरूम्स की 3D बनी। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किड्स वॉशरूम। तो फ्रेंड्स, किड्स वॉशरूम में भी हमने सारा टाइल का सिलेक्शन किया। सिलेक्टेड टाइल के हिसाब से 3D बनी। वैनिटीज हमने रेडीमेड लगाई हैं। मास्टर में सिर्फ हमने एक वैनिटी बनाई है, बाकी किड्स में बॉर्डर में हमने रेडीमेड राडोन का वैनिटी लगाया है। टाइलिंग और ये स्पेशल टाइलिंग जो बच्चों ने सेलेक्ट करी वो ब्लू कलर की थीम से रिलेटेड है और रस्टिक लुक भी, कॉपर रस्टेड लुक भी इसके अंदर आता है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों चलिए अब आपको दिखा देते हैं किचन। सो वेलकम टू किचन। और किचन भी मेरी टीम ने खास तरीके से इसकी पहले 2D बनाई, 3D बनाई। जो भी टाइल, स्टोन और लैमिनेट का कलर है वो पूरा 2D और 3D ड्राइंग में डाल के दिखाया। नीचे आप देखेंगे तो हमने कैपेचिनो लैमिनेट का यूज किया है और ऊपर हमने शैम्पेन लैमिनेट बनाई है। यहाँ पे हमने हाईलाइटेड टाइल यूज करे हैं। ग्रेनाइट स्टोन जो हमने लगाया है वो ब्लू पर ग्रेनाइट स्टोन लगाया है। ये बहुत खास तरीके का ग्रेनाइट स्टोन होता है। और देखिए आप क्या बढ़िया किचन की लुक आ रही है। यहाँ पे हमने एक पेंट्री यूनिट बनाया है और माइक्रोवेव के लिए जगह बनाई है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट अक्षय जी एंड रचना जी, और मैं चाहूंगा अक्षय सर और रचना मैम थोड़ी सी फीडबैक शेयर करें मेरी टीम के बारे में। कैसे अक्षय सर को हमारे ब्राइट इंटीरियर्स के बारे में पता चला और हमारी डिजाइन टीम ने कैसा काम किया, हमारी एग्जीक्यूशन टीम ने कैसा क्या काम किया, ओवरऑल मेरा क्या रोल रहा सर के प्रोजेक्ट में। ओवर टू यू अक्षय सर। थैंक यू धीरज जी। सो धीरज जी के बारे में मेरे को YouTube से पता चला। So when we bought a house, we wanted somebody to help us design the house, and I found Dheeraj ji. I gave him a call, and Dheeraj ji promptly called back. We planned for a meeting, and things started from there. Overall, I would say it's been an excellent experience working with Dheeraj ji. Starting from the time we met for the first time, we showed him the house that we had bought, what all our thoughts were. Till the time we moved into the house, it's been an excellent experience. I think the biggest thing for me is that Dheeraj is able to understand what a client wants or what a customer wants. So iski wajah se our job becomes very easy, right? We don't have to explain everything to Dheeraj. He understands what our taste is like, and then he would use his experience to tell us how to design things, what would look nice, what would not look nice. So I think that, according to me, has been the biggest takeaways from my experience with Dheeraj ji. I totally agree. So the first thing that I want to say about Dheeraj ji, he's a very warm person, and he is a part of a family now. He just feels like family. So Kesh and Dheeraj ji are like a family to us now. So like Akshay said, that we wanted a house which was tastefully done, but not very gaudy and simple, and we had our own color choices and own preferences, and Dheeraj ji made sure that he took care of all of them very nicely and very diligently. And about his entire team, I think the team is also very warm. I would like to say that they never say no to anything. So we changed a lot of stuff in between, something that we liked, something we didn't like, something that was made and we didn't like, but we never saw a frown on their face. They always did it with a smile. So, and we've got
the house or the home, I would say, like the home that we really dreamt of is the home that they deliver to us. Yes. I think just to cite a small example, Dheeraj ji and us, he created 3Ds for us to design the washrooms, the bathrooms, and in between we decided to switch. And the same thing happened for our kitchen. We had almost closed the design, we had purchased the tiles, and not for once Dheeraj ji said कि अरे आपने ऐसा क्यों कर दिया. He was extremely helpful in helping us do all these things. Plus, a special word of thanks to Sukesh. Yes. I think he's been extremely helpful. I have never seen anybody so calm, so peaceful, and extremely hardworking. And that's true for the entire team. Very patient. Very patient. With all our queries and our untimely calls, which we used to make to him. So they've been very patient with us. Yes. So sir, I am also very thankful to you and मैम जिन्होंने मेरी टीम पे ट्रस्ट किया, मुझ पे ट्रस्ट किया और इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमें दिया. हमने ऑर्चिड पैटर्न में इससे पहले काम नहीं किया था, तो ये मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है. और मैंने अक्षय सर से इस प्रोजेक्ट के दौरान काफ़ी चीज़ें सीखी और सर ने कहा हम बहुत काम और पॉजिटिव हैं, बट मुझे सर से पॉजिटिव और काम कोई भी बंदा नहीं मिला. एक दिन मैंने सर से कम्युनिकेशन में कहा भी था कि यू आर नेक्स्ट टू गॉड फॉर मी, मेरे लिए आप भगवान के बराबर हो. और यस, सर और मैम से हमेशा हमें यही फील आई डे वन से कि हम सर के कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, फैमिली मेंबर हैं. सो सर दिल से शुक्रिया. और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का भी शुक्रिया. आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तभी हम इतने पॉपुलर हो रहे हैं. तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में. तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें. बाय 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 फ्रेंड.